all. Today we are going to study history. अब जब हिस्ट्री का नाम सुनते हो तो क्या बोरिंग सी चीज़ है, मतलब बार बार हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री. बट गाइस, ऑनेस्टली हिस्ट्री इज वेरी नाइस. जब मैंने स्टोरी की तरह पढ़ने लगा तो इट वॉज वेरी नाइस. So you guys also study with me like a story. So the first topic is how some men became rulers. Guys, around 3000 years ago, some men became recognized as rajas. So as they did many sacrifices, like the Ashwamedha horse sacrifice. In this sacrifice, a horse was let free and was guarded so in this sacrifice, if the horse entered anyone else's kingdom, and if they let it pass, they said that they meant to say that the Raja who is performing the sacrifice is more powerful than us. But if they stopped it, they had to fight, and the Raja was the central figure. So he had a special seat made up of tiger throne, and it was very beautifully designed. So when he had his chariot, which was his companion, chanted tales of his glory to everyone. Soon the Raja and the charioteer became very important to everyone. So the Raja's relatives, wife, and his children, and the charioteer relatives, wives, children were all important to everyone and had to perform minor rituals. So the other Rajas were simply spectators. They just had to sit and watch everyone performing the sacrifice. So the priests performed these rituals, and they had sprinkled the sacred water on the king. And तो गाइज अब हम वार्ना सिस्टम पे आते हैं. वार्ना सिस्टम कितना बड़ा शब्द लग रहा है, बट इट्स नथिंग. सो वार्ना सिस्टम में 4 कैटेगरीज है: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. The Brahmins were to be priests. The Kshatriyas were to protect the area. The Vaishyas were to be herders, farmers, and craftsmen, etc. And Shudras were to serve the other 3. So, in this, the Vaishyas brought the gifts for the kings. तो गाइस, मैं आपको बता दूं जनपदा के बारे में. Janapadas were formed around 3000 years ago, and in Janapadas, it is made up of 2 words, Jan and Pada. Jan means people and Pada means a foot. So that line means that where the people have set their foot and have settled there. Guys, so अब archaeologists आए picture में. तो आर्कोलॉजिस्ट ने बोला कि 3000 साल पहले उन्होंने सेटलमेंट्स मिली, मतलब जनपदास की. मतलब 3000 पहले तो मैं भी नहीं थी, आप भी नहीं थे, कोई बंदा ही नहीं है जो 3000 साल ओल्ड हो. तो उनको पुराना किला इन दिल्ली मिला, हसीनापुर इन मेरठ मिला. गाइस, इधर के लोगों की 3 चीज़ें हैं. फर्स्ट कि they lived in huts. Second, they had cattle and other animals as well. Third, they grew crops. Guys, तो archaeologists को pots भी मिले. तो pots एक तो ग्रे में थे और एक रेड में थे. ग्रे was very special. Guys, तो अब आपको मैं अपना फेवरेट टॉपिक बताती हूँ. तो गाइज मैंने आपको बताया था कि 3000 पहले जनपदास बने. फिर आफ्टर 500 इयर्स एक और कैटेगरी आई पिक्चर में, महाजनापदास. अब कुछ पीपल रियलाइज दैट अच्छा, ये तो कुछ जनपदास हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम अदर जनपदास. सो दे बिल्ट अ कैटेगरी नेम्ड महाजनापदा. तो महाजनाpada was released of course 2500 years ago, and so they had forts, they had huge walls, and people wanted to settle there क्योंकि
यू नो उधर अगर कोई राजा की हिम्मत होती ही नहीं होगी कि इतने बड़े जो वॉल्स बने हुए हैं उसके ऊपर अटैक कैसे करें हम, क्योंकि ऑफ कोर्स ये राजा देयर इज मोर पावरफुल क्योंकि उसके ह्यूज वॉल्स एक्सेट्रा. सो दीज ह्यूज वॉल्स नीडेड brick, wood, etc. And they needed lot of plans. Maybe not lakhs of bricks, but at least 1,000 bricks, of course. And they need a lot of plan. So the rajas then thought to build armies. So they started building armies, and then they captured some elephants and trained them, and there was his charioteer. अब राजा ने सोचा अब तो हमारे पास कितना ह्यूज बना लिया, अब हमारे पास पैसा कहाँ से आए, पैसा चाहिए होता है ना बड़े चीज बनाने के लिए. तो फिर पहले तो राजा जो जनापदास थे जब और बिल्ड्स नहीं बनाए थे, आर्मीज नहीं बनाई थी, तो फिर तो जो गिफ्ट मिलते थे अदर राजा से उसी काम से ही चला जाता था. अब उसने बड़ा बना लिया था तो ही नीडेड मनी, तो ही गॉट फिर उन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू किया, टैक्सेस फ्रॉम पीपल, टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप, फ्रॉम गुड्स, एंड सम हर्डर्स वर आल्सो अलाउड टू गिव देयर एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस. सो गाइज अराउंड दिस टाइम दो मेजर चेंजेस आए एग्रीकल्चर में. एक तो आयरन प्लो यूज होने लग गया एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी होने. गाइस सो ये एक और मेरा फेवरेट टॉपिक है, अ क्लोजर लुक ऑन मगधा. तो मगधा अब ज़्यादा महाजनापदा बनने लगा. क्यों? क्योंकि उधर दो रिवर्स फ्लो करती थी, एक तो गंगा और एक सन. तो पीपल वांटेड टू सेटल हियर क्योंकि पानी है, क्रॉप्स इजीली ग्रो हो सकती हैं एंड सेटलमेंट्स आर इजी. तो पानी है तो बाकी सारी नीड्स हो जाएंगी वाटर की, और क्रॉप्स उग जाएंगी, दे कैन हैव फूड एंड ऑफ कोर्स दे नीडेड शेल्टर. सो they got it. So soon Magadha became Magadha. So guys, तो उधर एक फॉरेस्ट था, तो उन्होंने फॉरेस्ट से एलिफेंट्स कैप्चर किए एंड दे स्टार्टेड ट्रेनिंग देम. फिर उसके बाद उनको आयरन ओर्स मिले उधर, तो आयरन ओर्स में दे स्टार्टेड बिल्डिंग आयरन्स, वेपन्स एक्सेट्रा. गाइस, तो मगधा में दो पावरफुल रूलर्स थे, अजातशत्रु एंड बिंबिसारा. तो अजातशत्रु बेटा था बिंबिसारा का. दे वांटेड टू कैप्चर अदर जनापदास. तो फिर एक और पिक्चर में आता है एक बंदा, ठीक है, उसका नाम था अलेक्जेंडर. आपने अलेक्जेंडर तो सुना ही होगा. तो उसने वो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहता था. बेशक पूरे वर्ल्ड को नहीं किया, बट ही डिड सम पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया. तो वो आया इंडिया में. तो इंडिया में उसके सोल्जर्स आए एंड दे सेड these kings are too powerful, my sir, and we cannot fight them. Will of course fail. So they backed up the idea and they didn't fight with the rulers. अब वज्जी भी आता है पिक्चर में. आई नो बहुत लोग आ रहे हैं अभी पिक्चर में, आर गेटिंग ऑल कंफ्यूज, बट you'll deal with this, I promise. तो अब वज्जी आता है पिक्चर में. अब वज्जी को अब मगधा तो बन गया था बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम. वज्जी का था कैपिटल वैशाली, और वज्जी का जो गवर्नमेंट थी, आई नो आपको ये सुनकर हंसी आएगी, बट जो उसकी गवर्नमेंट थी वो थी गाना. सुनने वाला गाना नहीं, गाना. इन गाना दे वर नॉट वन रूलर, दे वर मेनी राजास. तो whenever there was a fight या किसी का मैसेज आए कि हम फाइट करेंगे, तो they discussed together and see how they could how could they deal with it, and then they made the decision, and finally they fighted and did all the things together. But the women, dasas, kamakaras were not allowed to take part of it, even though the kings made many discussions. But still, the women, dasas and kamakaras
were not allowed to take part of it. तो guys, अब अजातशत्रु को अटैक करना था वज्जी को. तो अजातशत्रु ने अपने एक मिनिस्टर को भेजा बुद्धा के पास. बुद्धा जी ने बोला, he gave a very diplomatic answer कि नहीं yes, नहीं no. तो he gave a very diplomatic answer. तो उन्होंने बोला कि do you meet in assemblies? He asked the following questions like, do you meet in assemblies? Do you respect the women? Do you force them or not? Are you together? Do you make the decisions together? And like questions like this. And if you did these all, you need not fight. But if you want to, you obviously can. तो guys, एक last चीज है, not the least but last. Guys, तो गानास और संघर्ष के जो रूलर्स थे, वो गुप्ता रूलर्स ने उनको कैप्चर कर दिया था. तो you'll read this about in chapter 9. So guys, this ends our chapter and I hope it was a lot of fun and you learned this as a story and I hope you learned it well. Bye! Guys, so like, share and subscribe and comment. Till then, bye!